fine and happy. Today we will read this chapter second, clauses. Okay, let's start now this chapter. When in a set of words, यह words का set होता है, there is a subject, activity, performing and action verb. जब इसमें जो भी क्रिया की जाती है, then that the combination of the words, उन्हीं शब्दों की combinations को ही is called a clause. Okay, a clause can function as a sentence. Clause sentence का एक ऐसा functioning होता है which may or the may not be the complete one, जिसके द्वारा एक sentence को complete किया जाता है. There are the two parts in the clauses. Example are subject and the predicate. The predicate express something with respect to the subject. जो predicate होता है always depend on the subject and the with respect to the subject. Then subject and the predicate will always be added. That's called a subject. Okay. Number 4 है independent clause. Independent clause क्या है? An independent clause is a complete sentence. Independent clause एक complete sentence होती है that can stand alone, जो हमेशा अकेले stand करती है. It express a complete thoughts and the contains the subject and the verb. इसमें क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और इसका जब कंप्लीट सेंस निकलता है उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं. इट इज ऑल्सो नॉन एज अ मेन क्लोज, और इसी को हम मेन क्लोज भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी वेंट टू द स्टोर. वह कहाँ गई? स्टोर में गए. ठीक है, तो ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस रखती है. दैट्स कॉल्ड द इंडिपेंडेंट सेंटेंस. सेकेंड है डिपेंडेंट क्लोज. Dependent on subordinate clause contains cannot stand alone. जो subordinate या फिर dependent clause होती है वो कभी भी अकेले stand नहीं करती, बल्कि its need and the dependent clause वह किस पर depend होती है? Independent clause पर dependable होती है. And to make a complete sense, और उसी के आधार पर उनका एक complete sense निकलता है. It contains the subject and the verb but does not express a complete thought. जैसे कि हम इसको जब साथ में लगाते हैं, जब एक complete sense निकलता है, यदि हम इसको ऐड ना करें तो यह सेंस इसका नहीं निकलेगा, बल्कि ये बीच में ही रह जाएगा. इसलिए हम इसको कहते हैं dependent clause. Dependent clauses can function either as noun clauses. जो डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं मुख्यतः किस पर होते हैं? नाउन क्लोज पर डिपेंड होते हैं. एडजेक्टिव क्लोजेस एंड और एडवर्ब क्लोजेस होते हैं. ओके, नंबर फर्स्ट है काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लोजेस. पहला है नाउन क्लोज. रीड द फॉलोइंग. जतिन हैज द इन्फॉर्म्ड मी. जतिन ने मुझे इन्फॉर्म किया दैट आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट. हमारी टीम टूर्नामेंट में जीतने वाली है. दैट डॉल्फिन्स आर द एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. जो ये डॉल्फिन्स है वो वास्तव में बहुत ज्यादा बुद्धिमानी होती हैं. इज अ वेल नोन फैक्ट. ये वास्तव में सही है. इन द सेंटेंस फर्स्ट द नाउन क्लोज ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, and in the sentence second the noun clause occupies the position of the subject. Okay, now reads its function with simples. Functioning है subject of a verb. subject की क्या क्रिया है? जैसे who will be selected for the post. It's a example. Next one, the subject in the sentence is the noun clause. Who will be selected for the post governing the verb is what? Is not certain. Okay. Next is object of a verb. I forget. क्या? What you had told me. The object of the transitive verb forgot in these sentences is the noun clause. What you had told me. That
हम बोलेंगे forget. Okay, that's called the functioning object of a verb. Next one, object of a participle. Learning that I was ill, he came to visit me. The noun clause that I was ill in the sentence is the object of the present participle, क्योंकि ये बात अभी हो रही है present participle की, जैसे लर्निंग का है what, क्या सीखा उसने, learning. The finite verb came, he has he as its subject in the main clause. Next term, object of an infinitive. He came to tell me that school was closed. कौन सा? That school was closed. तो the noun clause है हमारी that the school was closed. The object of the infinitive है हमारा to tell और main clause है he came. Okay. Next round, object of a preposition. Preposition छाटते हैं. This sentence है they show they somehow live on what they earn. The noun clause है what they earn. In the sentence is the object of the preposition है on. The main clause है is they somehow live. Okay. Next है complement of and the intransitive verbs or the incomplete predictions. Life is what we make it. The noun clause है what we make it. Complement of the verb है is. Next है in apposition, additions or to a noun or a pronoun. The news that a plane had crashed came as a shock to me. So the noun clause है that a plane had crashed. Okay. In the opposition to the noun है the news. Main clause है the news came as a shock to me. Okay. Next है the adjective clause. They who work the hardest are the most successful. I have lost the watch which was given to me by my father. मैंने वो वॉच खो दी जो मेरे पिता द्वारा मुझे दी गई थी. तो यहाँ पर है टेबल है. पहला हम करते हैं मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट. मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट कैसे करेंगे? सेंटेंस है हमारा द गिफ्ट विच प्रिया बॉट बाय वाज द बेस्ट. वह गिफ्ट जो प्रिया लाई थी वो बेस्ट है. तो एडजेक्टिव क्लूज है हमारी विच प्रिया बॉट. डिस्क्राइब द नाउन है हमारी द गिफ्ट और सब्जेक्ट द क्लूज है हमारी द गिफ्ट वाज द बेस्ट. ओके. नेक्स्ट है मॉडिफाइंग अ नाउन इन द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में हमारा नाउन है हु वॉन द टॉपर्स ट्रॉफी. एडजेक्टिव क्लूज है हु वॉन द टॉपर्स ट्रॉफी. नाउन है द गर्ल विच इज द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट है इन द सेंटेंस. मॉडिफाइंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेंटेंस है द डॉग फेच्ड द बॉल हिज मास्टर थ्रू. एडजेक्टिव क्लूज है हिज मास्टर थ्रू. नाउन है दैट बॉल और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा फेच. ओके. नेक्स्ट है मॉडिफाइंग द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेंटेंस है वी सेंड फ्लावर्स टू Arup who was unwell. एडजेक्टिव क्लूज है who was unwell एंड द नाउन है Arup और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा सेंट. ओके. नेक्स्ट है मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. सेंटेंस है वी वॉक्ड डाउन द रोड विच इज द फेमस फॉर इट्स कैप्स. एडजेक्टिव क्लूज है विच इज द फेमस फॉर इट्स कैफीज और नाउन है द रोड एंड ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन है डाउन. Remember, an adjective clause is a sentence is introduced either by relative pronoun such as
who, which, what, whose, whom, relative adverb such as where, when, why और how. Okay? जो एग्जेक्टिव क्लूज होती हैं वो अक्सर रिलेटिव प्रोनाउन से मिलकर ही बनती हैं, तभी हमारी एडजेक्टिव क्लूज कंप्लीट होती है। आगे है एडवर्ब क्लूज। एडवर्ब क्लूज है एग्जाम्पल, we left for the airport so as soon as the taxi arrived. हम जब तक एयरपोर्ट छोड़ चुके थे तब तक क्या आ गई थी, जैसे ही हमारी टैक्सी आई थी। Since the students are so eager, सारे स्टूडेंट कैसे थे, बहुत ज्यादा उत्सुक थे। We will go on a field trip, क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे, field trip के लिए। In the both the above sentences, the subordinate clause in the colored are adverb clause. वो फर्स्ट है, the adverb clause tells us the time. जो पहला सेंटेंस में हमें क्या बता रही है, टाइम बता रहा है कि हम जब हमने एयरपोर्ट छोड़ा था, जैसे ही हमारी टैक्सी आई, तो ये टाइम हो गया। नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस है, सिंस द स्टूडेंट्स आर सो ईगर, स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक है क्योंकि वो फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया रीजन। क्या हो गया, रीजन। ओके, नेक्स्ट है काइंड ऑफ द एडवर्ब क्लोज। Adverb clause of time. It is introduced by the conjunctions such as when, wherever, while, after, before, since, as long as soon as, no longer than, till, until, etc. जो ये समय की इक्वेशंस बताती है उसे कहते हैं adverb clause of time. Adverb clause of place is introduced the conjunctions such as where, whereas, whence and the weather. Example है where there is a peace, there is prosperity. Next है adverb clause of reason. It is introduced by the conjunctions such as the because, as, that, since. See example है he was angry, वो बहुत ज्यादा नाराज है, because क्योंकि reason है we came late, हम लेट आए थे, तो यहाँ पर reason create हो रहा है, that's called the adverb clause of reason. Next है adverb clause of comparison. It is introduced by the conjunctions such as than, no less than, as. Example, it is warmer than today, आज बहुत ज्यादा गर्म है, than it was yesterday, कल की अपेक्षा आज गर्म है, तो यहाँ पे हुआ comparison. Next है adverb clause of result. It tells the outcome of effect of the something that is happening. हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमारे साथ क्या घटना घटी और क्या होने वाला है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन, तो हम उसमें कंजक्शन यूज करेंगे सो, सो दैट, सच दैट, एग्जैक्ट। एग्जाम्पल है द कंडीशन वर सो बैड, उसकी कंडीशन कैसी थी, बहुत बुरी है, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल टू से, एंड द मेन क्लूज इन द सेंटेंस इज द कंडीशन वर बैड. नंबर सेकेंड, it was such a tricky situation that none of us knew what to do. The main clues in the sentence is it was the tricky situation. क्या है main clues यहाँ पर इस sentence की, tricky situations. Adverb clues of purpose. It is used when the intent, result or purpose to end the action is to be described. An adverb clause of purpose is introduced by conjunctions such as so, that less, so that, in order to, etc. Example, I dog begin to scratch at the door so that, ताकि the master would let it through. वह दरवाजे पर इसलिए पंजे मारता ताकि उसका मालिक उसके साथ लेकर उसको चला जाए. ओके, नेक्स्ट है she packed carefully lest she should forget something important, कि वह इतने अच्छी तरह से पैक करी थी कहीं वह भूल ना जाए. ओके, तो यहाँ पर हो गया पर्पस. नेक्स्ट है एडवर्ब क्लूज ऑफ द कंसेशन. when used as a subordinate clause, जब हम subordinate clause का प्रयोग करते हैं, it suggests that there is a something surprise. तो हम क्या होते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सरप्राइज होते हैं, और odd about what is said in the main clause, क्योंकि यह main clause के साथ ऐड होती है.
It is introduced by the conjunctions such as although, even if, however, even though, whereas, etc. एग्जाम्पल है ऑल दो यद्यपि द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट, जबकि सूर्य ज्यादा चमकीला निकलेगा, आई फेल्ट वेरी कोल्ड, तब मुझे ठंड महसूस होती थी, है ना। अतः जब तक सूरज नहीं चमका था, जैसे ही सूरज चमका तो मेरी ठंड क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरा है द मेन विंटर हॉलीडे इन इंग्लैंड वॉज ऑलवेज क्रिसमस, whereas in the Scotland it was New Year. Okay. Next, adverb clause of manner. It is kind of the comparative clause. ये जो clause है वो कैसी है, comparative clause है. It is introduced by the conjunction. इसमें conjunction लगाते हैं as if, as though, etc. Example है he did as he was told. उसने वैसा ही किया जैसे उसने कहा, है ना, as जैसे. Manner है उसका तरीका. It appears as it is the might way. Okay. Next है adverb clause of the condition. It states the condition or circumstances that would be the necessary for what is talked about in the main clause to happen. जहाँ पर कोई घटना घटी होती है या परिस्थितियां बताती है वो किस सिचुएशन में है, तो इट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन. उसमें ऐसी स्थिति में कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं जैसे as long as, provided, if, whether, unless. Okay. एग्जाम्पल है आई वॉन्ट गो टू हर बर्थडे पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाना चाहता अनलेस, अन्यथा शी इनवाइट्स मी, जबकि उसने मुझे क्या किया है, इनवाइट भी किया है. इफ इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सबऑर्डिनेटिंग conjunction to begin an adverb clause of condition. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.